Good morning, students. Today we will start chapter number 5, accounting ratios. It is also a tool for the management by finding ratios of different heads of the balance sheets, current assets, liabilities, current liabilities, long term, short term, profitability ratios. By finding the different ratios in this chapter, management can come to a decision for any particular case. So how find the ratios? For this, first of all, see, the ratios are to be classified in different categories. So for this you have to see classification of ratios. Which type of ratios management need to find? Yes, ratios may be classified into 4 categories. Number 1, it is liquidity ratio. Liquidity ratio. Number 2, it is solvency ratio. And number 3, it is activity ratio, or we can say turnover ratio. Activity ratio or turnover ratio. And the last, that is profitability ratio or income ratios. Profitability ratio or income ratios. Yes, these are the 4 categories in which the ratios are to be divided. Today we will start first liquidity ratio, this one, liquidity ratio. Yes, in this ratio, liquidity ratio is further divided into 2 parts. Number 1, that is current ratio, and next is quick ratio. In liquidity ratio, we have to find 2 ratios. Number 1, current ratio. Current ratio, or we can say working capital ratio. Current ratio is also known as working capital ratio, but the famous name for this is current ratio. Mostly common used name, that is current ratio. Yes, in current ratio, in liquidity ratio, how to find current ratio? Current ratio equals to current assets. This is a formula for current ratio. Current assets upon करंट लाइबिलिटीज़. किसी भी फर्म की जो करंट एसेट्स हैं, जिस फर्म की हमें करंट रेशियो फाइंड करनी है, उसकी करंट एसेट्स को कलेक्ट करेंगे, सारी टोटल करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ को नीचे रखेंगे और करंट एसेट्स को ऊपर रखकर हम उसको डिवाइड करेंगे, देन विल गेट द रेशियो दैट इज़ कॉल्ड करंट रेशियो. सो फॉर दिस you have to take first question, then you will better understand how to find current ratio. Yes, open page 5.9, question 1.
Page 5.9, question 1. In this question, non-current investments of a firm that is companies 1 lakh and current investment that is given 40,000, inventories including loose tools of 50,000 rupees. लूज टूल्स उस इन्वेंट्रीज़ के अंदर हैं, इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू है 2,80,000 और उसके अंदर लूज टूल्स 50,000 के इंक्लूड हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स हैं 160 और BR बिल्स रिसीवेबल्स ये हैं 20,000 के, और ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स हमारे पास 120 के हैं 1,20,000 और बिल्स पेबल्स 10,000 के जो हमें बिल्स पे करने हैं. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो हमने ले रखी हैं दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 2 लाख और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इज़ फॉर रुपीज़ 50,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस टोटल हमारे पास 20,000 के हैं, और कैश एंड बैंक बैलेंस दैट इज़ अमाउंट रुपीज़ 30,000. ये वैल्यूज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में. इन वैल्यूज़ में से वी हैव टू फाइंड फर्स्ट करंट एसेट्स. So for current assets, take which type of assets be come in this current assets, you better know. So take current assets first of all. Current assets. Current assets में बेटे हम क्या क्या लेंगे? Current investment 40,000 रुपीज़, inventories जिसमें लूज टूल्स भी इंक्लूड हैं, इन्वेंट्रीज 2,80,000 की हैं, लूज टूल्स इंक्लूड हैं उसको हटा देंगे, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा लूज टूल्स को हटाकर इन्वेंट्रीज, नेट इन्वेंट्रीज जो आ जाएगी 2,30,000. सो इन करंट एसेट्स टेक करंट इन्वेस्टमेंट, नेट करंट, नेट इन्वेंट्रीज हमारी कितनी है बोलेंगे, देन और क्या हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट एसेट्स होती हैं, डेटर्स BR ये सब करंट एसेट्स हैं, इनको इंक्लूड करेंगे, प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स और एट द लास्ट प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस. जो इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है इन दैट इंफॉर्मेशंस दीज आर द करंट एसेट्स. और भी होती है करंट एसेट्स, जो इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है इन दीज इंफॉर्मेशंस दीज आर करंट एसेट्स. सो टेक द टोटल ऑफ दीज करंट एसेट्स. करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू रुपीज़ 40,000 and amount of net inventories after subtracting the loose tools will get 2,30,000 and debtors amount to rupees 160, 1,60,000, BR 20,000 and at the last cash is 30,000. Total of this is 4,80,000. This is total of current assets from the informations given to us in the question. And now find current liabilities. Current liabilities. Again see the question. In current liabilities it is trade payables, creditors 1,20,000, bills payable 10,000. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर नॉट आवर करंट लाइबिलिटीज़ बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ये हमारी करंट एसेट्स. और उसके बाद हम लेंगे इसमें से प्रोविजंस, ये सब इनको टोटल करेंगे हम. क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स and short term provisions. Short term borrowings plus short term provisions. All these are current liabilities. Put the value of this. First of all take current assets, creditors. This is amounted to rupees
1,20,000. Creditors 120, it is given in the question, and bills payable 10,000 rupees. Now short term borrowings and provisions, these are 50,000 and 20,000. Take the total of it. Total is 2 lakh. Total of current assets is 4,80,000 and total of current liabilities, this is 2 lakh. So find now current ratio, which is our first ratio under the head of liquidity ratio. Liquidity ratio में पहली ratio है, first ratio है current ratio. So find this current ratio equals to current assets upon current liabilities. Now take current assets 4,80,000 and current liabilities, this is 2 lakh. By dividing this, you will get 2.4:1. The current ratio comes 2.4:1. If it is given in the question that comment on the ratio, then how we can comment? The ideal ratio for this current ratio is that is 2:1. जो ideal ratio हम current ratio को मानते हैं, जो perfect ratio मानते हैं, that is 2:1. Current assets must be twice of the current liabilities, 2:1. Current assets must be twice of current liabilities. But now come in this, according to this question, the commentary is that the situation of the company is, condition of the company is satisfactory. Now company is in a position to pay the current liabilities during the year. If we have to write comment, then comment on it like this. Current conditions or liquid conditions of company is satisfactory. Company is in a position to pay off their current liabilities because their current assets is more than the twice of the current liabilities. So students, this is our first ratio, liquidity ratio. In liquidity ratio today we have done this current ratio. Tomorrow we will do the next quick ratio. That's all for today. Thanks.